निर्विशेष सत्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आम टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य रु पढ़ुचे। आम तृतीय वर्षटा पढ़ी राधा कृष्ण प्रणय विवृत्ति लादिनी सत्योस्मा सेटा। तो एबे हमें नेक्स्ट वर्स को जीवा। In the next verse, the author further explains why Krishna assumed the form of Caitanya Mahāprabhu. Krishna desired to know the glory of Radha's love. Why is he so much in love with me? Krishna asked. That a good question. Krishna kahinki Chaitanya Mahaprabhu rupa nauchhanti. Then second question Krishna asked, what is my special qualification that attracts her so? Kahinki se mate bhal pauchanti? Why is he so much in love with me? कौन पाई से मो प्रति एते तांगर भल पाइबा तापर मो भीतर एमती कौन अछि जहा फल से मते एते भल पाउछ। एंड व्हाट इज एक्चुअल वे इन व्हिच शी लव्स मी। आ सी आनंद की से भल पाई कौन आनंद एमती प्राप्त होउछ। It seems strange that Krishna as the supreme should be attracted by anyone's love. A man searches after the love of a woman because he is imperfect. He lacks some. ये जगत जगतर जो भल पाइबाटा it's not in the absolute platform. The man searches for a love because he is imperfect. The love of a woman, that potency and pleasure is absent in man. Therefore, a man wants a woman. But this is not the case with Krishna, who is full in himself. Thus, Krishna expresses surprise. Why am I attracted by Radharani? And when Radharani feels my love, why? What is she actually feeling? To taste the essence of that loving exchange, Krishna made his appearance in the same way that the moon appears on the horizon of the sea. Just as the moon was produced by the churning of the sea, by the churning of spiritual loving affairs, of the moon of Caitanya Mahaprabhu appeared. Jati Krishna asthile, Krishna made his appearance, jemti mane moon jemti appear hochi churning ki sagar ru jem sagar madhyaru moon bahare sei bhaya aji Chaitanya Mahaprabhu ya Chandra bhajan Chaitanya Chandra. Indeed, Lord Chaitanya's complexion was golden, just like the luster of the moon. Although this is a figurative language, it conveys the meaning behind the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. The full significance of his appearance will be explained later chapters. Chaitanya Mahaprabhu ଆସିବାର ବାକି କାରଣ ଗୁଡାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରେ ବୁଝି ପାରିବା। ତ ଏଇ ସବୁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଟା ଦେଖିବା 5 6 एटा 5 टा तो गोटे देह बोली कहले। श्री राधया प्रणय विकृति महिमा के प्रणय महिमा कीदृशो वा नैव वा साध्यो जैनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं चास्या मदनुभवत कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाद्य समजनि सचिगर्भ सिन्धो हरिन्दो। Desiring to understand the glory of Radharani's love, Radhara Mahima, the wonderful qualities in him that she alone releases her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love. Krishna asked Radhara Mahima Prema Rasasi.
एटा जगत को बतैया पई फर्स्ट टा आ बाकी कृष्ण के भीतर कौन अच्छे और राधा रानी को कौन फीलिंग अच्छे। So that's why the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachidevi, Sachigarbha Sindhu Harindu. As the moon appeared from ocean, then the moon ocean appear ichandi, sendi Caitanya Mahaprabhu appear ichandi. After offering respects to Lord Chaitanya, Krishnadas Kaviraj begins offering them to Lord Nityananda, the seventh verse of Chaitanya Charitamrita. The author explains that Lord Nityananda is Balaram, who is the origin of Mahavishnu. Krishna's first expansion is Balaram, a portion of whom is manifested as Sankarshan. So Sankarshan ki hele? Balaram kar gute portion, who then expands as Pradyumna, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva. In this way, so many expansions take place. Although there are many expansions, Lord Sri Krishna is the origin, as confirmed in the Brahma Samhita. He is like the original candle, from which many thousands and millions of candles are lit. Although any number of candles can be lit, the original candle still retains its identity as the origin. In this way, Krishna expands himself into so many forms, and all these expansions are called Vishnu Tattva. Vishnu is a large light, and we are small lights, but all are expansions of Vishnu. तो विष्णु पर्यंत समस्त विष्णु तत्व माने କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟ विष्णु पर्यंत तो यही सबू जो एक्सपेंशंस गुडी होउछंती जदियो सब सेम समस्तंगर सेम एनर्जी पोटेंसी किंतु जेमते कैंडल रो एग्जांपल प्रोपर देछंती ब्रह्म संहिता तो ब्रह्म संहिता रे जेमती कोइ जे दीपार्चिरे वहिता सात्कर्म अपुपेत्य दीपायते विपरीत हेतु समान धर्म जस्ट तादृगवैच विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमाम जामि जेमती गोटे कैंडल रो आउट कैंडल लगेले दीटा को एका आलोक दो किंतु हेले भी गोटे कैंडल सोर्स गोटे हला तारो चाइल्ड बड़ी तो सेही भली कृष्ण को ही बलराम को संकर्षण तापरे संकर्षण प्रद्युम्न भली प्रकाश इच्छन्ति वी हैव टू एग्री दैट किंतु समस्त विष्णु तत्व तो ये संकर्षण विषय कहते संकर्षण कारण तो साई तयो साई गर्भोद साई च पयोक्ति साई शेषश्च दशांश कला सनित्या नंदाख्य राम शरणं ममास्तु. May Sri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshan, Seshnav, and the Vishnu who lie in the ocean, Karan ocean, Garbhoshan, the ocean of milk, are his plenary portions and the portions of his plenary portions. समझता है क्योंकि भगवान का पोर्शन 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 सेटा कुछ when it is necessary to create the material universes, Vishnu expands himself as Mahavishnu. Mahavishnu is material universe of nature. Mahavishnu lies down in the causal ocean and breathes all the universes from his nostrils. Thus, from Mahavishnu and the causal ocean spring all the universes, and all these universes including our universe, are floating in the causal ocean. In this regard, there is a story of Vamana, who, when he took 3 steps, stuck his foot through the covering of the universe, and water from the causal ocean flowed through the hole that his foot made, and it said that the water became the river Ganges. Therefore, the Ganges is accepted as the most sacred water of Vishnu and worshipped by all Hindus, from the Himalayas down to the Bay of Bengal. As one जानिथिबे Vamana piercing universe. एटा बढ़िया पेंटिंग गोटे प्रोपर देइछथि एमती फुटटा ऊपर पड़ी एटा ना
A pending day. भगवान बामन देव ताकर गोटे पादरे पूरा सबु ब्रह्मांड भेदिकी पूरा बॉर्डर जोटा ये ब्रह्मांड टॉप मोस्ट पोर्शन सेट से भेद कर माने यूनिवर्स टाइप वाला है यूनिवर्स रो ऊपर पियर्स कर पियर्स कले सेटू गंगा आछंती कारण causal ocean water from causal ocean is flowing and that is known as river Ganges. Mahavishnu is actually an expansion of Balaram, who is Krishna's first expansion, and in the Vrindavan pastimes, his brother. तो महाविष्णु किए बलराम को बाहर बलराम को बाहर संकर्षण प्रद्युम्न अमृत वासुदेव तापर नारायण तापर पुणी संकर्षण प्रद्युम्न अमृत वासुदेव तापर पुणी संकर्षण को महाविष्णु आसे नारायण तापर महाविष्णु तो ये महाविष्णु बलराम को भी बाहर एंड वृंदावन फर्स्ट टाइम रे बलराम बलराम ब्रदर रूप इन महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. The word Ram refers to Balaram. Since Lord Nityananda is Balaram, Ram also refers to Lord Nityananda. Balaram and Nityananda could refer. Thus, Hare Krishna Hare Ram addresses not only to Krishna and Balaram, but Chaitanya and Nityananda as well. So, it is Krishna, Chaitanya Mahāprabhu, Krishna, Balaram को जंती संबोधन कुछ Chaitanya और Nityananda को मतलब संबोधन कुछ. The subject matter of the Chaitanya Charitamrita deals primarily with what is beyond this material creation. The cosmic material expansion is called Maya, illusion, because it has no material existence. Because it is sometimes manifested and sometimes not, it is regarded as illusion. But beyond this temporary manifestation, the higher nature, as indicated in the Bhagavad Gita 8.20. तो ये चैतन्य चरितामृत जो विषय कथा हवा हमें सेटा हला मटेरियल क्रिएशन का बियॉन्ड ए कॉस्मिक मटेरियल क्रिएशन टा को माया बा भौतिक जगत होचे कारण यार टेम्पररी सिचुएशन दुख हलम अशाश्वत एठी जहां भी देखुचे अशाश्वत किंतु बियॉन्ड दिस टेम्पररी मैनिफेस्टेशन इज हायर नेचर और परा प्रकृति परस्तस्मात् तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन जस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. Yet there is another nature which is eternal and transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. जदि हो जाओ तो नष्ट हो जाओ किंतु सेटा as it is wrong. भौतिक जगत नष्ट हो आध्यात्मिक जगत सबले सेटा द डेफिनेशन कोटा भौतिक जगत कोटा आध्यात्मिक. The material world has a manifested state, vyakta, and potential, unmanifested state, and avyakta. It is called avyakta. The supreme nature is beyond the manifested and the unmanifested material nature. The superior nature can be understood as the living force, which is present in the bodies of all living creatures. The body itself is composed of inferior nature, matter, but it is the superior nature that is moving the body. The symptom of that superior nature is consciousness. Thus, in the spiritual world, where everything is composed of superior nature, everything is conscious. In the material world, there are inanimate objects that are not conscious. But in the spiritual world, nothing is inanimate. There's a table. A table is conscious. The land is conscious. Trees are conscious. Everything is conscious.
केते सुंदर explanation material world और spiritual world. Material world रे the body a body टा बहुत तैयारी inferior nature किंतु spirit हमको a body को move करूची. So the symptom of that spiritual nature is consciousness. जहार consciousness अच्छी ता माने soul अच्छी. Thus in the spiritual world where everything is composed of spiritual matter, superior nature, everything is conscious. तर सेठी सबु वस्तु मध्ये चेतना थी. Yes. In the material world, there are inanimate objects that are not conscious, but in spiritual world, nothing is inanimate. Spiritual world, किछि भी inanimate समस्त consciousness अछि. Table is conscious, land is conscious, trees are conscious, and everything is conscious. कौन example के दे परिवे? यार हमें शास्त्र जे गुडा conscious वेल के जानिगा. What example? Prominent example कोट अछि. सुचर मते जानथि. मते जे कहले जी कौन क्वेश्चन कले मो फोन टा खराब हो गेला था एमती कौन अछि भलिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड रे ट्रीज गुडा टेबल भी कॉन्शियस लैंड भी कॉन्शियस ट्रीज भी कॉन्शियस यार कोन एग्जांपल हमें जानि छि पर छे. अच्छा टेबल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड ना कहले त हां स्पिरिचुअल वर्ल्ड एमती कल्पतरु अच्छा से ना टेबल की वो चिंतामणि कल्पतरु हां आउट स्पेसिफिक ले टेबल को बाडेले टेबल टा ये हबो टेबल को बाडेले भी से हमको हॉट करबो. हां सिर्फ मे बे हमर बेठी नहीं फर्स्ट हां टेबल को कष्ट हबो कष्ट हबो आ से हमको हॉट करे. हां से हमको भी हॉट करबो. तो एटा गुटे आउट हमें शास्त्र रु भी देखि जे जोटा माने जति गच्छ लेखाइ नै कृष्ण बुक रे कृष्ण जो बाटे चलती थोड़ा सही बाटे फूल पके देबे बेस. हां से लोई पडंती फळ लोई पडंती एकदम फूल भी लोई पडंती केते की फूल गच्छ माळा माने से लोई पडंती. हां आ गुटेला लेक्चर जो क्षीर उतर जीवो से जो क्षीर करबा जे क्षीर भी कथा कोंती. हां दामोदर लीला रे क्षीर उतर जानती. हां दामोदर लीला क्षीर हां एकदम तो माने हले एठो जाना पड़छे मासु पांच आ जो बैंगल्स गुडा जसोदा कर म्यूजिक होथबे बाजेथबे खुशी सब से. हां एई वाला बहुत एग्जांपल्स अछि. आ गुटे पैराग्राफ पढ़ दो. In the it is not possible to imagine how far this material manifestation extends. In the material world, everything is calculated by imagination or by some imperfect method. But the Vedic literatures give real information of what lies beyond the material universe. Since it is not possible to obtain information of anything beyond this material nature by experimental means, those who believe only in experimental knowledge may doubt the Vedic conclusions. But such people cannot even calculate how far this universe extends, nor can they reach far into this universe itself. Material universe it is not possible to imagine. भगवान को गोटे भौतिक शक्ति को भी हमें कल्पना कर. That which is beyond our power of conception is called achintya or inconceivable. It is useless to argue or speculate about the inconceivable. If something is truly inconceivable, it is not subject of speculation or experimentation. Our energy is limited and our sense perception is limited. Therefore, we must rely on the Vedic conclusions regarding that subject matter which is inconceivable. Knowledge of the superior nature must simply be accepted without argument. How it is possible to argue about something which we have no access? The method for understanding transcendental subject matter is given by Lord Krishna himself in Bhagavad Gita, where Krishna tells Arjuna at the beginning of 4th chapter how to accept this knowledge. Naita parampara rasi. Imam vivasate yogam pruktavan vivashvan manavipraha manuriksha kave apra. I instructed this imperishable science to the sun god, then which Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, father of mankind. Manu instructed it to Shaka. So, parampara re jnanata aschi. And this is the method of parampara discipline succession.
Similarly, Srimad Bhagavatam explains that Krishna imparted knowledge into the heart of Brahma. Prathama Bhagavat knowledge ta Brahma ko hridaya aschi, with the first living creature of this universe. Then Brahma imparts these lessons to his son Narada or disciple, and Narada imparts this knowledge to his disciple Vasudev. Vasudev imparted it to Madhvacharya. Madhvacharya then gave this knowledge to Madhavendra Puri. And from Madhvacharya it comes to Madhavendra Puri, then to Ishwar Puri and Caitanya. तो ये बड़ी परंपरा रे ज्ञानटा आसुची ए पॉइंटटा कहउछन जे अचिंत्य ए वस्तु को बुझिबा अचिंत्य इवन इफ इट इज मटेरियल गोटे जिंस मटेरियल हेले भी हम तो बुझिबा अचिंत्य स्पिरिचुअल मैटर को काल केमति बुझिबा सेइ ने भगवत गीता रे मैटरटा कहले जे असेंडिंग बाट अछि डिसेंडिंग बाट अछि नॉलेज एक्सेप्ट करियो तो असेंडिंग बाट रे माने चढ़ी चढ़ी हम निजर चेष्टा करी कि बुझिबा डिसेंडिंग माने टू एक्सेप्ट फ्रॉम परंपरा आमे एबे डिसेंडिंग अवरोहण पंथारे अछि अवरोहण पंथारे अछि बोले आमे जेते हाईएस्ट फिलोसफी लेबे हम बुझि जाउछ बिकॉज़ आमे ताके एक्सेप्ट कर दिछु अथॉरिटी तो एटा इंटेलिजेंस तो तापरे एबे क्वेश्चन आसीबो चैतन्य महाप्रभु निजे कृष्ण से काई गुरु ग्रहण करिले कोन दरकार से पॉइंट पर कहबे नेक्स्ट टाइम एट पढिबा हरे कृष्णा जय जगत कुशल प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम एक जो आरोहण पथ और अवरोहण पथ हां माने एटा हला ऊपर आसीबा तळु जिबा ऊपर को जिबा बस तळु को आसीबा एटा वाटे सीडी ना हां असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एटा हला असेंडिंग हला असेंडिंग माने हम 0 रु 1 2 3 एते 8 पहुंचना एटा वाटा आउ डिसेंडिंग हला कोन डिसेंडिंग हला अपन डायरेक्ट ऊपर पहुंचे बिकॉज़ हमें परंपरा टू ग्रहण टू एक्सेप्ट द नॉलेज फ्रॉम परंपरा एटा हला प्रभु जी हम छोटे बेले गोटे हमर भी गोटे गेम खेलुथले सेटा भी गोलकधाम गेम था सेटा भी से गोलकधाम केम पहुंचीबे किंतु आमे जते अलग अलग बात गुडा गले से पहुंचे मुश्किल किंतु आमे ऊपर जे तळको आसुतिले ठीक राइट वे रे आमे आसी पहुंचुतिले एकदम एक ऊपर जे जेटा आसुची सेटा ही ठीक राइट वे अच्छा अच्छा तेड गेम थिला हां गोलकधाम ता ना भी गोलकधाम अच्छा अच्छा देखिए बढ़िया हां मतलब तो मत बुझाला ना क्या कहले तब जे हमर जो पथटा আছে অবরোহণ পথ हां অবরোহণ পথ हां এটা আরোহণ চড়িয়া এটা অবরোহণ ডিসেন্ট डायरेक्ट परंपरा रे ग्रहण करछि हमें परंपरा रे ग्रहण करछि असेंडिंग वाला कोन रिसर्च करी गुरु महाराज को गोटे लेक्चर रे सुनथले जे बुझी पालेनी से कहथले से असेंडिंग डिसेंडिंग ता कहथले जे हमर पथटा जो अवरोहण पथ माने ऊपर तळ को आसीबा हां ऊपर तळ माने ज्ञानटा ऊपर तळ को आछि परंपरा रे ज्ञानटा तळ को आछि हम तो हमें आज इट इज ग्रहण कर दउछि हां ओके थैंक यू ठीक है हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण